Hello friends, Kalarav School Halol presenting this video for standard 8 English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about a poem from the book Honeydew. The poem is about when I set out for Lyonnesse. Lyonnesse is a one kind of a place, imaginary place you can say, from which writer was travel about. Thomas Hardy was the poet of this poem. Let's see what is there in the poem. This poem, when I set out for the Lyonnesse, it is narrated by the poet to visit an imaginary place. That imaginary place is known as the Lyonnesse. In the opening part of this poem, if you see, the poet mentioned that Lyonnesse is 100 miles away. Okay, he adds that the journey to Lyonnesse was a lonesome one. Okay, he started from the Lyonnesse on a cold night. From the beginning of his part, he started the journey from the cold night. The poet informs us that if it was a very cold and the night was and the night cold night sky was a full of star. Okay, full of stars. He also mentioned that he traveled 100 miles in such a circumstances to reach the Lyonnesse. The poet did not know what happened to the Lyonnesse during his stay there. He also informed us that too, Promfect or any wise magician called Goose, what had happened with him in Lyonnesse. The only thing he was aware was rare and deep, and it could not be measured. Okay, people could see it but they could not understand its mystery, so they remained silent. So this is the central theme, this is the summary of this poem. If you see, let us see the poem by stanza. What is there in this poem? First of all, first read the information which is given here. As a young appreciate architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited to the parish to supervise the restorations of a church. Okay, in this poem the poet, this is an imaginary poem. ये जो imaginary poem है इसके अंदर जो Lyonnesse is a one kind of the place. Okay, जो राइटर जो है वो वहाँ पे जाता है. ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिस, जब वो वापस वहाँ से रिटर्न हो रहा होता है, एट दैट टाइम द पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम. लोग जो है उसके बारे में दो चीज़ जो है वो नोटिस करते हैं. अ न्यू ग्लो इन हिज आइज, उसकी आंखों में एक अजीब तरीके की चमक होती है. एंड क्रैम्पेड पीस ऑफ अ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट. और दूसरा जो है वो उसकी पॉकेट के अंदर जो अजीब तरीके का एक पेपर रहता है उसके बारे में वो बात करते हैं. दैट पेपर इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफिक्स. ओके, वो बायोग्राफिक्स से वो पेपर रिकॉर्डेड है, मतलब कि जुड़ा हुआ है. इट कंटिन्यू अ ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम. यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाई अ विजिट टू अ प्लेस विच इज़ पोइट्स कॉल्ड द लियोनेस. पोएट ने एक प्लेस विजिट किया था जिसको वो लियोनेस नाम से बता. When I set when I set out of the Lyonnesse 100 miles away, the rhyme was on a spray and starlight lit my Lyonnesses when I set out for a Lyonnesse 100 miles away. Writer told in the first stanza कि जब मैं लियोनेस के लिए निकला, जब मैं रवाना हुआ तो वो कितना दूर था? 100 माइल्स अवे, मतलब कि 100 माइल्स दूर था. जो ट्री थे उसकी पत्तियां थी, उसकी जो डालियां थी उसके ऊपर कुछ पाला जमा हुआ था. और राइटर जो थे वो अकेले थे, एकदम अकेलेपन के अंदर. तारों का जो चमक आ रही थी, तारों की जो रोशनी आ रही थी, ये जो सीन था वो उस टाइम का समय है जब वो लियोनेस के लिए निकलते हैं. इन द फर्स्ट स्टेंजा ही डिस्क्राइब अबाउट द एटमोसफियर, हाउ विच काइंड ऑफ द एटमोसफियर वर देयर when he went for the Lyonnesse. So he described that. In the second stanza, what is there? What would branches at a Lyonnesse while I should
sojourner there. No prophet durst declare, nor did the wrist wizard guess what would be chance at the Lyonnesse while I should sojourner there. बराबर, यहाँ पे राइटर बताते हैं कि कोई भी मसीहा या जादूगर, ओके, ब्रांचिस बिचिस मतलब के मतलब हैपन टू हैपन। तो यहाँ पे जो राइटर बताते हैं कि कोई भी मसीहा या जादूगर नहीं बता पाया कि ये लियोनिस जो है वो किस तरीके से होगा, मतलब कि ये जो उनके घर से है वो कितने दूर होगा। किसी की भी हिम्मत ये इसको बताने की नहीं थी। राइटर सेकंड स्टेंजा में इसको मेंशन करते हैं। और इन द थर्ड स्टेंजा इन माई आइज, तो उनकी आंखों में एक अजीब तरीके का मैजिक दिख रहा था। अ मार्क्ड विद अ म्यूट सरमाइज, और उसकी आंखों में एक तरीके की चमक दिख रही थी। माई रेडियंस रेयर एंड द फैथ मोलेंस व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम द लियोनिस विथ मैजिक इन माई आइज। राइटर जब वापस आते हैं तो वो क्या बताते हैं, एक अजीब तरीके की उनकी आंखों में चमक है और एकदम शांत अनुभव से वो अनुमान लगाते हैं कि जब लियोनिस से जब वो वापस आते हैं तो एक अजीब तरीके का मैजिक जो है वो उनकी आंखों में दिखता है। थॉमस हार्डी ही डिस्क्राइब अबाउट दिस पोएम, ही डिस्क्राइब अबाउट वन प्लेस जिसका नाम है लियोनिस, जिसके बारे में राइटर यहाँ पे बताते हैं। बहुत एक इमेजिनरी बेस्ड पोएम है फ्रेंड्स, और एक प्लेस ऐसा है जो लियोनिस करके उन्होंने नाम दिया है जहाँ पे वो राइटर जाते हैं और रिटर्न आ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस journey, which kind of the feeling he has to face, he described about that feeling only. Okay, so this is enough for this poem and this video. I hope you guys can understood about this poem. Related to this video, whatever the question answers are there, that I will send you to the PDF. You have to write down in your notebook. In our next video we'll discuss about the new chapter, new poem. Okay friends, bye, take care.